Memon, late Ali Nawaz Memon, who has been a great supporter of Sana all along. And then we are going to go to Nawab Shah, which is Abid Lashari, Special Education sector. He comes from National Disability Development Forum. And then I have one project to share with you. So, without further ado, Nilofer Khamisani, please. Thank you very much, Ada. मुझे नालो नीलोफर खमीसानी I would prefer to talk in Sindhi because it's long time I did not talk in Sindhi. So it's my pleasure to be here. ॾाढी ख़ुशी थी हिते अची मूंखे तव्हां सभिनी जे साम्हूं ॻाल्हाईंदे इलाही घणी ख़ुशी थिए थी पर मां अकेली न आहियां मूंसां गॾु मुंहिंजी टीम आहे कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी समेत असां आया आहियूं so I would prefer to invite Dr. Goodson first and he would like to say something. We are not going to take a lot of time of you, but we have something special for you guys. Thank you, Nilofar, and thank you to all of you. It's an honor and it's humbling for me to be here. My name is Todd Goodson. I'm the Associate Dean of the College of Education at Kansas State University. We have embarked over the last 10 years on an initiative in the College of Education to internationalize our programming. We do everything from undergraduate, master's, and doctoral level programming remotely, online to people around the world. We host students from around the world. We have a richly diverse population, both in terms of our faculty and in our department, my home department of curriculum and instruction. And we have international graduate students from around the world, including two from Pakistan. It's been my honor. I'm here, of course, because of Nilofar, and I've been it's 4 years now. But 4 years ago, she joined me, and I was honored to serve as her major professor, and I've learned so much from her. Thank you for introducing me to this group, and thank you for everything that I've learned from you and from all of our other international students. We are eager to begin a conversation in how we might be able to support other regions around the world, whether that be we host STEAM camps, science, technology, engineering, arts, mathematics around the world for middle school and elementary school age students remotely. Around the world, we do teacher staff development for teachers from around the world, and we are continuing to host more and more graduate students from around the world. So we're eager to start the conversation and to participate in any way we possibly can. Thank you for having me. Thank you very much, Dr. Goodson. Thank you very much for joining us here in Sana and representing Kansas State University. Now I have Mona Minking, who is going to tell us something special. So Mona Minking is the Director of Global Education Outreach. She works for the Department of Curriculum and Instruction, College of Education, Kansas State University. She is here in a bit. Hello. Hi. Is everybody awake? After eating lunch, it just kind of nap time sets in. And we haven't had lunch? Wait, I haven't had lunch either. Well, okay, I appreciate you coming to listen to us first before lunch. Thank you for that. My name is Mona Minking. I'm Director of Global Education Outreach at Kansas State University College of Education. I just wanted to share just a few things. First of all, thank you, Dr. Makbul, for inviting us. I understand we're one of the first universities to come and attend your conference. Nilofar is the conduit to that. All I can say is come between an idea and a Cindy woman, and it's going to happen. I just wanted to take more. Dr. Goodson spoke already about our programs and the things that we can do. We're eager. We were here listening to the panel last night.
Dr. Kavi Mandan and myself, and the things you all shared about the importance of primary school education, improving primary school education back home. And we have lots of programs, as Dr. Goodson mentioned, that we could collaborate on. But as you know, and it was mentioned yesterday as well, all that requires financial support. There was mention of financial support, maybe reaching out to the government. There was mention of private funds. There was mention of lots of different avenues to be able to, we want to be with you on this journey. That's why we're here. So we're excited to have this opportunity. But Nilufar, and I have to brag on her, is the perfect poster child for something like this. Why? She's amazing to begin with. She came amazing to us. But while she has been with us, she has raised the name of not just her family, but her culture and her country. This year she was awarded an Alumni Award for Leadership. She was the recipient of various scholarships at Kansas State University. So as a community, she is doing what we are all talking about. And you know, she's able to do that because she has the support of her family, her husband Ayaz, who is here somewhere, who is an amazing support. And I know it's the mission of this organization to educate. Education, education, education. One of your initiating members talked with us earlier and told us about how initiating this was about education, about making sure that the future, your children, continue learning about Sindhi culture and language. But us who are not Sindhi also want to learn about your culture and language. So if you open this to the communities that you are in, you can also teach us, because it's a very rich culture, one of the oldest cultures of the world. So, Nilufar, thank you for bringing this to us. We're honored to be here. We hope to participate also in other initiatives that you have. I know you have local ones. We hope to be here next year. And I hope we're the first university of many that join. We're happy to share this with our other colleagues at other institutions so that they can come and support as well. I think together, it's definitely an initiative that I think any educator would want to get behind, is improving the conditions of primary school education. And as Dr. Goodson mentioned, we have opportunities that we can collaborate on, both virtually to start trainer of trainers, set up trainer of trainer programs so that we can train people back home to continue that so it becomes sustainable. Anyway, so thank you all for this opportunity. I want to also thank Nilufar for dressing me today. This is the most comfortable attire. I don't know why I don't dress like this every day, because this is so comfortable and beautiful. So thank you again, Nilufar, for everything. Thank you very much, Mona, to be here with me and to say very nice words for me, for Sana, and for our community. It's really very pleasure to work with you as well. So, thank you very much. मां बिलोंग कयां थी पाकिस्तान सां, सिंध सां, ठीकु आहे, त उहा हिकिड़ी जेका आहे न सिक, उहा जेका हुब किथे बि रहूं, उहा रहे थी दिलि में कमु करण जी जेका असां जिदोजहद हमेशह ज़हन में रहंदो आहे त कुझु कयूं पंहिंजे क़ौम जे लाइ, कुझु कयूं पंहिंजनि माण्हुनि जे लाइ. मुंहिंजा कुझु वरितल इनिशियल स्टेप्स आहिनि पंहिंजनि माण्हुनि जे लाइ जेके मां तव्हां सां शेयर करणु चाहींदसि. असां ॻाल्हायूं था गुरबत ते, असां ॻाल्हायूं था पंहिंजी मुआशी हालत ते, असां ॻाल्हायूं था एजुकेशन ते, but what we can do as an individual and how we can use this platform is also in my talk. So ॻाल्हियुनि जे बारे में ॻाल्हाईंदे मां चवंदसि त असां मां हर माण्हू, हर इंडिविजुअल पर्सन जेको कुझु न कुझु करे सघे थो पंहिंजे क़ौम जे लाइ, पंहिंजनि माण्हुनि जे लाइ. वी ऑल कैन डू इवन दैट. त असां अकेले सिर्फ़ु कुझु बि न आहियूं, असां इलाही कुझु आहियूं. सो असां एज़ अ कम्युनिटी त अञा बि घणो कुझु आहियूं. असां हिकिड़ो क़दम बि अॻिते वधी काउंसलिंग में, सिलेक्शन ऑफ कॉलेज में, हर स्टेप ते असां हुनजी मदद करणु चाहियूं.
खोड़ सारा पाकिस्तानी हिते अचनि था पर ॾाढो घटि तादाद आहे, ॾाढी घटि परसेंटेज आहे उन्हनि सिंधी ॿारनि जी जेके इलाही टैलेंटेड आहिनि, पर उनखे ख़बर न आहे त कीअं अवेल कयूं इहे अपॉर्चुनिटीज़ असां, कीअं असां ॿाहिरि निकिरूं, कीअं असां पंहिंजी तालीम जेको आहे हासिल कयूं, फॉरेन डिग्री असां वटि हुजे, विच त आहे पर गाइडेंस न आहे। इन जे लाइ मां इहो स्टेप वरितो आहे त जीअं कैंसर स्टेट यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व थी असांजी कम्युनिटी में, मां त अॻे यादि रहियां हमेशह जेको बि अप्रोच करणु चाहे या मुंहिंजा वर्ड्स तव्हां माण्हुनि में पहुचाइणु चाहियो त एवरी टाइम कॉलेज सिलेक्शन हुजे, कैरियर काउंसलिंग हुजे या एप्लीकेशन प्रोसेस हुजे, हर ॻाल्हि में मां वेठी आहियां। ॿी हिकिड़ी शइ मां इनिशिएटिव वरितो आहे त सेना जी प्लेटफॉर्म तां मां इहे स्कॉलरशिप अनाउंस कई आहे। नाले जी स्कॉलरशिप आहे जेका लॉ स्कूल जे स्टूडेंट्स जे लाइ हूंदी। सेंटिमेंटल पॉइंट, सॉरी अबाउट दैट, बट ये स्कॉलरशिप जेका आहे सा इनिशियल स्टेप आहे एसएम लॉ कॉलेज जे स्टूडेंट्स जे लाइ, जेके फर्स्ट ईयर जा स्टूडेंट्स हूंदा, ॿ स्टूडेंट्स असां सिलेक्ट कंदासीं इनिशियल स्टेप ते, जंहिंमें असां जेको आहे सो ये स्कॉलरशिप उन्हनि ॿिनि ॿारनि खे ॾींदासीं उन्हनि जी फीस जे हिसाब सां, माना उन्हनि ग़रीब ॿारनि खे फाइनेंशियल सपोर्ट जेके एकेडमिकली सुठा हूंदा। अॻिते हली असां हिन स्कॉलरशिप खे अञा वधाए सघूं था, ॿिया कॉलेजिस लॉ कॉलेजिस असां जेको आहे सो हिन स्कॉलरशिप खे अंडर आणींदासीं ऐं ॿियनि ॿारनि जी बि असां हेल्प कंदासीं जेके लॉ में प्रोफेशन खे अॻिते खणी अचणु चाहिनि था। सो इहे ॿ टे शयूं हुयूं जेके मां इनिशियल स्टेप्स वरिता आहिनि हिन सेना जे प्लेटफॉर्म तां, ऐं कोशिशि कंदसि त अञा बि अॻिते कुझु करे सघां ऐं तव्हां सभिनी जी हेल्प मूंखे हर वक़्तु हर क़दम ते दरकार रहंदी त तव्हां जीअं मुंहिंजी इहे सभु ॻाल्हियूं अॻिते पहुचायो। जेके माण्हू अप्रोच करणु चाहिनि था दे आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। कैंसर स्टेट यूनिवर्सिटी जे कंहिं माण्हू ताईं पहुचंदा त मूं ताईं पहुची वेंदा आराम सां, या मूं ताईं पहुचंदा त मां उन्हनि खे इलाही कुझु गाइड करे सघां थी, मां उन्हनि खे इलाही कुझु ॿुधाए सघां थी, उन्हनि जे पंहिंजे पर्पज़, उन्हनि जे पंहिंजे हिसाब सां, उन्हनि जी पंहिंजी नीड जे हिसाब सां। थैंक यू वेरी मच ऑल। Sorry, one more thing. We have something for Dr. Makbul. Actually, he was the person who invited us first time Kansas State University on this platform. So I would like to invite Dr. Makbul here and Dr. Goodson. Yes, here is. Wait. Photo. Sorry. Awesome. Thank you very much. Thank you very much, Nilofer, and all the other participants at Kansas State University. Thank you very much for coming over. Now I will invite Hassan Sheikh. He comes from a business background like me, but he switched his career into IT, and now he is a passionate participant in the initiative that Washington DC chapter has started, and now they are launching it through SANA. Washington DC chapter did not start at Central EC, Sana EC. Okay, sorry about that. Thank you for keeping me honest. So Hassan, please, the forum is yours. Salam, namaste, sat sri akal sabni ke. एक प्रोग्राम असां अदादी नवाज़ मेमन जे नाले सां स्टार्ट करण लाइ इन लाइ कयोसीं जो अदादी नवाज़ कंहिं तारीफ़ जो मोहताज न आहे। लास्ट ईयर उनजी डेथ थी वई हुई। उन जे लाइ असां इहो सोचियोसीं पिए त अहिड़े नमूने खां को प्रोग्राम स्टार्ट कयूं जेको उन्ही खे ई रिप्रेज़ेंट करे सघे। लिटरली मां केतिरा ई सालनि खां साईं जे क्लोज़ रहियो आहियां, ॾिठो अथमि ही बीन हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल।
सो उन हिसाब सां असां इन प्रोग्राम खे सोचियोसीं त हेल्प त कयूं वरी साण साण असांखे इहो बि हुयो ज़हन में त असां कीअं सो असां सोचियोसीं त हिन कीअं इन प्रोग्राम खे असां रन कयूं जो असांखे फाइनेंसिस जा जेके प्रॉब्लम्स आहिनि उन्ही खे बि अवॉइड करे सघूं उन सां गॾु असां मां साहब सां बि कुझु अर्सो कमु करे चुको आहियां करे बि रहियो आहियां त साईं बेंगाली जेका ॻाल्हि कई अॻोड़े सेशन में त जेके नंढा नंढा जेके प्रोग्राम्स आहिनि दिस इज़ रॉन्ग दैट दे आर एक्चुअली नॉट मेकिंग अ डिफरेंस मुंहिंजो पर्सनल एक्सपीरियंस आहे मां 10-12 साल पुरानी ॻाल्हि आहे मां पाकिस्तान वियो हुयुमि त हिकिड़ो छोकिरो आयो हुयो असांजी गाॾी खे ड्राइव करण लाइ उनखे हार्डली ही गॉट लाइक अ couple hundred rupees to drive us from one location to another मां हुनखे पुछांसि पियो तूं छो थो करे हुन चयो असां वटि खाइण लाइ पैसा आहिनि गाॾी काॾो असां हथु करे टैक्सी करे हलाए सघंदासीं So I asked him to write something about his family and background and let me see if we can help you out. और साहब ने तो उनके कोई भी second hand किस्म की गाड़ी वठी दी से within few years he actually bought a brand new Toyota Corolla and he was using a taxi taking care for his mom, his nephews, and he was even planning for the marriage. So these small things actually makes a big difference. So what we are looking in this program, we are looking the people kind of that who know the target, who has their skill set, they have a hurdle of the finance. उनके फाइनेंसिस जो जेको मुश्किल थी वञे पई काथे रुकजी था वञनि पिया त उनखे हिकिड़ो धिको ॾेई करे उनखे टारगेट ते पुॼायूं ऐं पोइ वरी उहे वरी विलिंग आहिनि हेल्प करण जे लाइ सो वी कैन डेवलप अ सिस्टम एंड प्रोसेस सो तंहिंजे लाइ असां हिकिड़ा अपॉर्चुनिटी लोन्स अदाली नवाज़ मेमन जे नाले सां शुरू करे रहिया आहियूं जंहिंमें इहो ई प्रोसेस ऐं कॉन्सेप्ट खणंदासीं त उहे ॿार उहे छोकिरा छोकिरियूं जेके ख़ासि करे सिंध में या वरी स्पेशल केसेस में जेकॾहिं हिते बि उहो प्रॉब्लम थी रहिया त उनजी हेल्प करे सघूं सो हिन प्रोग्राम जो नालो अली नवाज़ मेमन अपॉर्चुनिटी लोन्स इन हिसाब सां असांजो चेयर जेको आहे उहो अदा सरफराज़ मेमन आहे अदा कामरान मेमन अदाली नवाज़ जो एल्डर पर्सन उहो ऐं मां अदा सरफराज़ असांखे ऑनर ॾिनो त असां ॿिन्ही जी टीम जो मेंबर ठहूं सो उहो असां प्रोग्राम अंडर साना स्टार्ट करे रहिया आहियूं जेके बि डोनेशन थींदा साना जे लाइ उहे सभु जेको आहे deductible hunda tax deductible so because Sana is 501c3 program हिन में मेनली जेके आइडियाज़ आहिनि त असां उन्हनि खे नीडी सिंधीज़ जिन खे लोन जी ज़रूरत आहे कीअं ॾियूं पर हिन खे लोन करे चऊं even though we understand that they may not be able to pay us back but at least they know that they might need to pay back so उन जे लाइ असां हिकिड़ो सिस्टम डेवलप कंदासीं हिकु डेटाबेस अहिड़ो ट्रैकिंग सिस्टम पहिरियों फॉर्म सेटअप कंदासीं जंहिंमें उन्हनि डेटा वठी सघूं ऐं पोइ उनखे डेटाबेस जे थ्रू उन्हनि खे फॉलो अप emails वेंदियूं रहनि फिगर आउट कयूं काथे आहिनि ऐं सिस्टम अपडेट थिए as soon as they get the job or they achieve the target so we will start reminding them they need to pay back the loan so उन्हनि जे लाइ जेका very interest free loans हूंदा helping needy Sindhis raise their standard of living so इंसान जी मदद थी सघे थी letting needy Sindhis know that they are not alone not forgotten असां actually अदाली नवाज़ खे बि नथा विसाइणु चाहियूं he was also our Sindhi great leader too giving needy Sindhi people hope for the future in a way हिकिड़ो मां पाण हिकिड़ो केस आहियां means when I was very young and going through the high school or colleges I had no idea what to do I had no clue how to get something and once I know what to get something I had no idea whether I can do it or not so all those things are असां हिकिड़ो पाथ हुननि खे ॾिसूं था रस्तो था ॾिसूं त कीअं उहो अॻिते अची करे निकिरी सघनि था पिया creating a program that will partly self-sustaining through जेको लॉन असां क्रिएट कयूं था त इनिशियली असांखे हेल्प जी ज़रूरत हूंदी जेका असांखे पुश बैक ॾे हिकिड़ी साइकिल खे स्टार्ट करे but then slowly gradually this program can self-sustain itself हाणे हेल्पिंग एरियाज़ में कहिड़ी प्रोजेक्ट्स खे करणो था असांजो मोस्टली फोकस इहो आहे not the long term but we will go for that too but mainly we are focusing short term or loans for small scale businesses कंहिंखे शॉप ओपन करणी आहे कंहिंखे रिक्शा खपे थो पियो कंहिंखे delivery bicycle खपे थी पई so they can start taking care of their own family once they start taking care if even they pay back 50 rupees 100 rupees a month that will be okay too हेल्थ केयर में असां ॾिठो आहे त केतिरा ई पाकिस्तान जी एजुकेशन सिस्टम जो प्रॉब्लम आहे केतिरा ई डॉक्टर्स आहिनि जेके कुझु नथा करे सघनि पिया अदा सरफराज़ एक्चुअली कुझु अहिड़नि माण्हुनि सां बि मिलियो आहे ॻाल्हायो आहे जेके UK में नर्सिस जी ट्रेनिंग करे उते अची पहुची चुका आहिनि
जेकॾहिं डॉक्टर हिते अची करे डॉक्टर जे लेवल ते नथा अची सघनि त नर्सिस जी लेवल ते था अची सघनि था उनखे कीअं गाइडेंस ॾिजे कीअं फाइनेंसिस ॾिजे once they achieve and arrive here they can start also helping us out too. Loan for IT education and training मुंहिंजी पर्सनली जेका फील्ड आहे उहा IT जी आहे जीअं त आसिम ॿुधायो I have MBA from Sun University and that's the only degree I had in education. बाक़ी several certifications on the अमेरिका जे हिसाब सां. So I know both. I know finances, I know IT, so I can combine them, I can use them, and we can get the benefit. But here, mainly, we will be focusing on the small projects, like new apps kiyan thaajan, nada program languages unke kiyan sekhajan, Amazon ji selling kiyan thindi hai, rugo Amazon na hai, Walmart, Costco, Target, पर ये इलाही शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके असांखे इनिशियली ख़बर न हूंदो आहे त इन्ही खे प्रोसेस कीअं कयूं. सो अहिड़ा नंढा ट्रेनिंग सेशन्स हुजनि या वीडियोज़ हुजनि पर मेनली असां उहो था ॾिसूं पिया उहे कैंडिडेट्स जेके असांखे अची करे चवनि था असां हे करणु चाहियूं था दिस इज़ द हर्डल हेतिरो मूंखे लोन खपे त मां इनखे स्किप करे नेक्स्ट अचीव करे सघां थो पियो. पर उन सां गॾु जेकॾहिं असां जीअं ॿिया प्रोग्राम्स अॼु नीलूफर थियो या ॿिया बि जेके डिफरेंट असांजा जेके प्रोग्राम्स हली रहिया आहिनि की उनखे का गाइडेंस खपे थी पई त असां उन्हनि खे रेफर कंदासीं हिननि सां ॻाल्हायो त तव्हांखे वधीक मिले पोइ असां वटि अचो त तव्हां फाइनेंसिस करे अॻिते प्रोसीड कयूं. लोन फॉर IT एजुकेशन उन्हनि जे लाइ ॾींदासीं. अच्छा हे असांजो लाइफ साइकिल हुनजो प्रोग्राम जेको फंडामेंटल बेस ठाहियो आहे प्रोग्राम जो जंहिंमें इनिशियल फाइनेंसिंग असांखे जेका ज़रूरत हूंदी जेका स्टार्ट कंदी प्रोग्राम खे कमेटी जो चेयर जेको आहे अदा सरफराज़ अदा कामरान मेमन ऐं मां हूंदासीं जेके वेटिंग कंदासीं उनजी एप्लीकेशन्स खे स्क्रूटनी कंदासीं उनखे प्रोसेस करे उन्हनि खे लोन स्टार्टअप्स ॾींदासीं या ट्रेनिंग्स जे लाइ ॾींदासीं ऐं देन वी विल स्टार्ट ट्रैकिंग देम बैक टू. So once they achieve their target, so they should start paying us back as well. ऐं इन में जेके नंढा प्रोग्राम्स आहिनि हेतिरो असां डिटेल में इन करे लिखियोसीं त जेकॾहिं तव्हां चाहियो था पिया मां ॿाहिरि वेठो आहियां पोस्टर्स ते I will be there as soon as the session ends and I will stay there as long as you guys have questions. Come please ask. So हे डिफरेंट नंढा प्रोग्राम्स आहिनि जंहिंजे बारे में असां सोचूं था त असां उन जी हेल्प करे सघूं था पिया हेल्थ केयर में बिज़नेस स्टार्टअप्स में ऐं IT में. ऐं हिते हाणे असांजी तव्हां खां रिक्वेस्ट आहे मां एक्चुअली रिक्वेस्ट कंदुमि अदा सरफराज़ जेकॾहिं हुजे ऐं अदा कामरान प्लीज़ स्टैंड अप. अदा कामरान I want people to know अदा अली नवाज़ जो एल्डर पर्सन अदा कामरान मेमन और टीम मेंबर अदा सरफराज़ was here. हाणे सभ खां पहिरीं अपॉर्चुनिटी टेस्ट तव्हांजो हिते थो स्टार्ट थिए त असां टे तव्हां खां रिक्वेस्ट था कयूं तव्हांखे ॿुधायूं था this is the opportunity we see, this is how we can help the people. We are lacking on finances. If you help us, we can achieve it. Thank you. Thank you very much, Hasnain. And you actually saved us some time. I'm sorry I did a bad housekeeping job of keeping the session, each session to 10 minutes. Because we want to have some question and answer at the end of the presentations. So I will invite Abid Lashari to come over and take the stage for his presentation. Thank you. एकड़ी असल सभनी अध्ययन के अदास के अस्सलाम वालेकुम नंढड़ी हिकिड़ी असांजी डॉक्यूमेंट्री आहे जेके US कॉन्सुलेट कराची ठाही आहे असांजे कम खे एक्नॉलेज कयो आहे 2 मिनट असां उहा पेश कंदासीं हुन खां पोइ तव्हां सां मुखातिब थींदासीं 10 मिनट खां पहिरियां ख़तमु कंदासीं जीअं तव्हांजा सवाल थी सघनि. आवाज के दूसरे स्पीकर के हों क्लाइमेट चेंज अगर असांजो टॉपिक आहे मेन उन जे हिसाब सां शुरुआत थींदी. माइक्रोफोन
माइक्रोफोन उते रखी छॾियो स्पीकर नवाब शाह में आए, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया नवाब शाह को इसे अब बना दिया ईदी फाउंडेशन का। वहाँ सामान आता रहा, हम वहाँ से खैरपुर लेकर गए, नुशरो फिरोज लेकर गए, सांगड़ और कंबर शकात कोट, उसके साथ साथ लाड़काना में भी 3000 का राशन दिया। ईदी साहब की तवसत से ये इंतजाम रिलीफ सोसाइटी मलाइशा की हमारा इदारा उनके साथ लिंक हो गया, फैसिलिटी ने लिंक कराया, उन्होंने फिर हमें डोनेशन दिया। वो खुद भी 7 लोग आए, नवाब शाह का विजिट किया, गांव गोठों तक गए, कैंपों में जाके खुद 1100 फैमिलीज को हमने राशन दिया 1 हफ्ते में। उसके साथ यूएसए का ग्लोबल गिविंग फाउंडेशन है सर, उन्होंने भी हमें डोनेशन भेजा। रिलीफ के बाद अभी हमारा आ रहा है रिहेबिलिटेशन का 2500 फैमिलीज को कंसर्न वर्ल्ड वाइड की तवसत से हम नवाब शाह में आरजी शेल्टर बना देंगे ताकि वो विंटर का उनका सीजन अच्छा गुजरे। बचपन में मेरे साथ एक हादसा हो गया, मेरे दोनों हाथ जल गए थे। इसी जले हुए हाथों के साथ माशाल्लाह मैंने मास्टर्स किया। 2013 में मुझे एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तवसल से LAFP के जरिए मुझे अमेरिका जाना हुआ। वहाँ पे अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट 1993 में पास हुआ था। वहाँ एक माजूरों की तंजीम थी अमेरिका में, वो मॉनिटरिंग करती थी कि ये कानून इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसमें मुझे बाकायदा शामिल किया गया, ग्रांट राइटिंग सिखाई गई, फंड रेजिंग की स्ट्रेटेजी सिखाई गई और कहा गया ये कानून है क्या, पूरी प्रेजेंटेशन दी। उसका जो अमली मुजाहरा था, अमली इम्प्लीमेंटेशन था, वो मुझे दिखाया गया। उसके साथ साथ ज़हनी माजूर जो बच्चे हैं उनकी बहाली कैसे होती है, उनके बहाली मराकज़ भी मुझे विजिट कराए गए। मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक मैं अपना प्लान ऑफ एक्शन लेकर आया, ख्वाब लेकर आया, काश ये सब कुछ मेरे पाकिस्तान में भी हो। पाकिस्तान पूरे में अगर मैं ना कर सकूँ, मैं कम से कम मेरे सूबे सिंध में जरूर हो। मैंने यहाँ पे डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन को साथ मिलाया, हमने डिस्कशन की और ये तय कर दिया कि हम सिंध हुकूमत से बात करेंगे। लॉबिंग की हमने और माशाल्लाह 2 साल में 2014 में माजूरों का कानून पास हो गया। उसमें कुछ कमी पेशी की, फिर 2018 में एक जामिया कानून माजूरों का जब मैंने वहाँ पे रिहेबिलिटेशन का एक कॉन्सेप्ट लिया था, मैंने एक ज़हनी माजूर अफराद जो बच्चे हैं उनका एक बहाली मरकज बना लिया नवाब शाह में, जिसको सिंध हुकूमत सपोर्ट कर रही है, फंडिंग दे रही है। और उसके साथ ज़कात में और दूसरी जो चैरिटीज़ हैं, इंडिविजुअल फिजियोथेरेपी हो गई और ग्लोबल गिविंग फाउंडेशन यूएसए की, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब माशाल्लाह 119 बच्चे हैं और ये 4 साल में तकरीबन 3 से 4 ऐसे बच्चे हैं जो बहाल हो चुके हैं, जो कुछ नहीं बोलते थे, वो स्पीच थेरापी से बाकायदा बोल लेते हैं, जुमले बना लेते हैं, अपने मकसद की बात कर लेते हैं। उन बच्चों को रिहाइश और खाना पीना और एयर कंडीशन के माहौल में रहना, गर्म पानी ठंडा देना, उनके जो वालिदैन हैं उनके साथ भी ताल्लुक बरकरार रखा है कि ओनरशिप उनकी रहे। ये यतीम खाने में नहीं रहते। ये लंबा प्रोसेस है हमारा और ये चलता रहेगा। 8-10 साल में बच्चे हमारे इंशाल्लाह अपने काम करने के काबिल बन जाएंगे। अब हमने इनिशिएटिव लिया, लाड़काना में एक नया सेंटर बनाने जा रहे हैं। इसी तरह ये मेरा मिशन जारी रहेगा। मैं चाहता हूं कि सिंध के कम से कम हर जिले में एक मरकज जरूर हो जहां पे हमारे जो ज़हनी माजूर बच्चे हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर से तरबियत और तालीम लेके वो अपने आप को भी सपोर्ट कर सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, ताकि हम यहाँ पे बराबर के शरीक हम बन जाएं, माशरे को सपोर्ट कर सकें और कौमी धारा में शामिल हो सकें। लाइट अगर केर खोले छे लाइट वगैरह लख मेहरबानी साईं अवां असांखे टाइम ॾिनो। मां थोराइतो आहियां यूएस कॉन्सुलेट कराची जो जंहिं एक्नॉलेज कयो असांजे एफर्ट्स खे। मां थोराइतो आहियां साना जो जंहिं असांखे दावत ॾेई हिते 2-10 मिंट असांखे ॾिना जंहिं असां तव्हां थी पंहिंजो प्रोग्राम पुॼाए सघूं।
ऐं थोराइतो आहियां मां सिंध हुकूमत जो जे इनिशिएटिव में 2009 में असांखे स्टार्ट करण में सपोर्ट कई ऐं थोराइतो आहियां असीं अली नवाज़ मेमन साहब जो जीअं असांखे हिते मुतारिफ़ करायो ऐं असांखे वॾो हेल्प कंदड़ अमेरिका में असीं अली नवाज़ बिस्मिल्लाह कई ऐं ॿिया दोस्त बसना करिया सर हिकिड़ो ही जेको असांजो सिलसिलो आहे ज़हनी माज़ूर ॿार तमामु घणा आहिनि तमामु घणी ज़रूरत आहे रिहेबिलिटेशन जी डिमांड ॾाढी घणी आहे सप्लाई तमामु घटि आहे मुंहिंजो ख़्वाब हर ज़िले ते वञणु आहे मां स्टार्टिंग डिवीज़न मां कई आहे शहीद बेनज़ीराबाद खां हाणे असां लाड़काने पहुची चुका आहियूं मार्च 2023 खां वठी असां लाड़काने में स्टार्ट करे छॾियो आहे हाणे ॿी डिवीज़न में वेंदासीं 6 डिवीज़नूं माना 6 सेंटर खोलियूं था इंशाल्लाह ताला हुन खां पोइ हर ज़िले ते अचिबो अहिड़ा ज़हनी माज़ूर ॿार डाउन सिंड्रोम ऑटिज़म सीपी जा ॿार जिन के जेके दरवेश सरबा आहिनि ऐं पंहिंजनि घरनि में त केरु आहिनि पर ॿी लफ़्ज़नि में ॾिसी सघो था पंहिंजे घरनि खां ॿार जेका वधाणनि जानवरनि जा उते ज़ंजीरनि में ॿार ॿधल आहिनि तव्हांजे ॻोठनि में बि हूंदा अगरि तव्हां उते नज़र करियो उन्हनि ॿारनि खे तमामु घणी ज़रूरत आहे रिहेबिलिटेशन जी अॼु ताईं माण्हू माज़ूरी खे सम्झी बहाली खे सम्झी न सघिया आहिनि जीअं त माण्हू चवंदा आहिनि त दवा अचे का इंजेक्शन लॻी वञे गोरी अची वञे असांजो ॿार ठीकु थी वञे पर ही माज़ूरी मुस्तक़िल हालत जो नालो आहे हिन खे वॾो टाइम लॻंदो बहाल थियण जे लाइ उन लाइ रिहेबिलिटेशन ज़रूरी आहे असां पेरेंट्स खे पैगाम पहुचाईंदा त पंहिंजा ॿार असांखे ॾियो त जीअं फिजियोथेरापी साइकोथेरापी स्पीच थेरापी करे वञे ऐं मूंखे ॾाढो ड्रेजारे जो कराची में जॾहिं रिहेबिलिटेशन सेंटर हुया मां उनजो विज़िट कयो त मां हिकिड़ो ख़्वाब खणी दीगर इस्लाम में वञणु पियो चाहियां अंदरूनी सिंध न चऊं खणी नवाब शाह ऐं या ॿिनि शहरनि में जेके ॿार अहिड़ा हुया उनखे सर्विस लाइ सिर्फ़ु कराची ऑप्शन हुयो पर कराची ताईं पहुचणु ऐं वरी 5 खां 10 साल उन ॿार खे रिटेन कराइणु थेरापी ॾियणु ॾाढी मुश्किल ॻाल्हि हुई असां ग़रीब माण्हू आहियूं किराया भाड़ा कोन कराची में असांजी रिहाइश कान हुई उन करे मां नवाब शाह हिकु सेंट्रल पॉइंट आहे सिंध जो उते सेंटर खोलियो जी खैरपुर जा ॿार दातू जा ॿार मटियारी सांगड़ नौशहरे जा ॿार वधि में त इनखे एक्सेस करे सघनि 100 खां मथे ॿार उते आहिनि उहे ॿार करे रहिया आहिनि उन लाइ सेटअप असां कामयाबु थियो त असां वरी लाड़काने पहुताऊं जी जेकबाबाद कंदकोट ऐं दादू जो ज़िलो उन ॿारनि खे कवर करे सघूं असांखे तव्हां साना जे दोस्तनि जी तमामु घणी ज़रूरत आहे ॿियो न त जेका ज़कात में प्लेज थींदी आहे उहा तव्हां असां सां करे सघो था साल में हिकु दफ़ा ग्लोबल गिविंग फाउंडेशन USA जी आहे जंहिं वटि असांजो अकाउंट आहे उहो लीगल वे में पैसा वठंदा आहिनि 10% जी चार्जिस आहे 90% इन ॿारनि लाइ मोकिलनि था लीगल वे में असां EAD आहियूं ॿाहिरि फॉरेन फंडिंग वठी सघूं था ऐं उन सां गॾोगॾु असां चाहींदासीं लाइफ मेंबर तव्हां दोस्त थी सघो था NDF जा असांजो ॿार एडॉप्ट करे सघो था 100 USD महीने जो ख़र्चो आहे ऐं जेको तव्हांखे सम्झ में अचे त तव्हां असांजा कीअं साथी थी सघो था तव्हां ज़रूरु थियो लख लख महिरबानी ऐं इन में तव्हांजो को सवाल हुजे त ज़रूरु कयोसि We're going to take questions at the end, so don't worry about it. And thank you very much, sir, for the presentation. You are truly an inspiration, at least the way I looked at it. So you are my hero now. So thank you very much. We are going to take questions for sure, because I'm going to make it short as well. So, Abid, if you can take your seat, we can get the last of the presentation out of the way, and we are going to go with the question and answer center. I'll take like 2 minutes to set up. जेसी ताईं सेटअप करे ऐं सिर्फ़ु तव्हांखे ॿुधायां त हिन सेशन खां पोइ जेका इटली मां जेके फिल्म प्रोड्यूसर्स आया आहिनि जिन सिंध ते फिल्म ठाही आहे 17 मिंटनि जी उहा असां हिते स्क्रीनिंग कंदासीं ऐं प्रोड्यूसर ऐं कैमरामैन ॿई हिते आहिनि ऐं अदी सुहाई अबड़ो जेका उन बि उन फिल्म में परफॉर्म कयो हुयो उहा बि ॾिसी सघंदा ऐं असां हुन सां Q&A सेशन कंदासीं so don't miss out that session. All right. Initially, जॾहिं असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं हिन सेशन जे बारे में त आइडिया इहो हुयो त असां आइडिया पर्सन ऐं मनी पीपल वी पुट देम टुगेदर इन अ रूम
to talk about startups and how we can collaborate and basically raise money for profit organizations or initiatives. So my perspective is that. So I'm not doing any charitable work. This is a social enterprise presentation. So it is not going to be just for money, but also some social services. And the first section of the presentation is just basically to tell you what I have been doing so that you know what can be done from data and analytics and AI perspective. And then I'm going to talk about the end, the plan that I have for that social enterprise initiative. So we started our AI Factor company, used to be ClearEdge Technologies, like 3 years ago with my partner. He has 3 decades worth of experience in chemical engineering. I come from finance and software side of things. So we created this company. So our premise was to combine chemical engineering knowledge and AI side of things and come up with a solution. So we started this whole initiatives. So the whole idea is basically to, I'm not going to bore you with the details of how you collect data or what we do. I'm going to just talk about the use cases that we have done in Pakistan so that you know what can be done. So we started with one of the leading fertilizer manufacturing company. So if you look at this small chart, we have not done a good job at it. So it is 0.18. So most of the slip is around in February, it's 0.18, and we reduced it to 0.12. So it is 1.12 here. So that has saved them about 800 million US dollars in Pakistan. Fertilizer company is not a cheap company. You need at least $1 billion US dollars to put a plant. And then you can obviously produce any number of fertilizers. This particular fertilizer company produces 2 types of fertilizer. One is nitrogenous base, which is called urea, if you come from agriculture background. And this is the urea plant problem that we resolved. And the main target was to reduce the CO2 slip from the absorber. Then we spoke with one of the plants. It's a PTA plant. It used to be owned by ICI, but then ICI spun it off. Korean company Lotte took it over, and their problem was they used to do analysis on their crystallizer every 4 hours. So it would take them about 4.5 hours to react to the incident that happens if the particular reading goes beyond the range. So we have created a soft sensor. Now they can get the data within 5 minutes, and they can reduce the variability in the quality of that crystallizer, and that will save them about $2 million US dollars. Third project that we did was this compressor. This is a plant in Red Deer. They wanted to have there is a compressor that they were working on, and they had data. Their initial vibrations were going up and down, and they had a chronic issue. So they wanted to know how much time would they need so that the compressor goes down and they can plan the normal maintenance on the plant. So we told them that the plant is going to go down around June, and actually it did. So that gave them good amount of time to plan ahead. They did not save
money, but they were able to plan their shutdown properly. So they were pretty happy about it. This is a current project that we are doing again with Fatima Fertilizer. CO2 slip also, we got a contract from Fuji Fertilizer, so they are going to save quite a bit of money. But this is very special project. They have been struggling with the project quality for a very long time. So if we implement it correctly, they are going to save about $5 to $6 million. So, and they have given us quite a bit of money as well. So we have created all these library of use cases, and we have started talking to the people in Middle East and North America. So that's my background. So I'm going to talk about now what I want to do with all that information. And I don't have to tell you what AI is doing. There is absolutely no area of human activity that is not touched by AI right now. It is there, it's going to take jobs, it's going to improve quality of life, it is going to improve quality of services and products. So what I have in mind is to create a family clinic and chain of family clinics to collect data beside providing quality service. Because data is everything. When you talk about AI, starts with data, ends with data, and you have algorithm in between. So data collection is important. The reason I'm not doing anything here is there are a lot of laws, there are a lot of regulation, privacy comes into play. So you can't even start to use any data that you have available. In Pakistan, you don't have data at all. So obviously if data is not there, there is no privacy, there is no regulation. So I'm not saying that we are going to do some unethical things, but what I'm trying to say is there's a huge opportunity where you can run a clinic, run an EMR, have clean data in there, and then use it for any of the number of use cases. So the whole premise is basically that we want to provide quality service and we want to make it affordable so that it doesn't break their homes. Normally it does. And third one is to collect data. That is not written here. So that's the first thing that I have in mind. Second thing is the first premise is that primary care is not available in Pakistan. And if it is, it's just for the very rudimentary things, and people actually take self-medication and be good with it. People go to medical store, they go there, they just ask for antibiotics, and they get it. And they complete a course, they are good for next 4 months, and there goes your doctor's knowledge in there. There are quite a few people who do not have doctor's degrees, they are running clinics. So what happens, if you have a case, by the time you actually understand that you cannot deal with it, they go to tertiary or secondary, and they go to Karachi and they spend millions of rupees. So if you get a good quality service within your area, you don't have to do that. You can go to a quality clinic. Just like here, we go to family physician first and then get referred. So the whole idea is to have an EMR, have good doctor who can take care of your things, and then give you the quality of service so that you don't go to the secondary or tertiary. And if you have to, you get referred rather than going there directly. So that's the whole thing that I want to do. I have some, the way I want to do is I want to run a pilot clinic and make sure that it gets to the break-even point within first 12 months. And if it doesn't work, it works, we expand it and add the facilities. And facilities can be as high as having a
a few beds in there as well. So you can imagine what else can be done. For example, create a lab, a small lab or elaborate one, depending on how your clinic is going. I have put together a very small clinic financials here. I did not understood the budgeting portion. I forgot my MBA degree. I may have to consult Hasnain here. I put 10%, which is basically wrong for budgeting. It should be 30%. And this particular chart does not have any manpower that we have to get if we get to subject matter expert hiring, because data has to be cleansed and reviewed and analyzed while working with the subject matter experts. So whatever I have, it does not include it. So what I am asking is, I want to have a partnership with a person who has subject matter expertise, or that person should have access to that knowledge base. So that means if you are a person who has money, but he has a friend or family member, or a person who has close-knit relationship with a network of subject matter experts like researchers or doctors. So I want that kind of person to collaborate with me. I don't want any money person to come in, because they are not going to add value. I'm not looking for just money. I want to have a subject matter expert, and I'll come from logistics and software and analytics and AI side of things. So that's about it. And we are going to open now for question and answer. If you can introduce yourself, address the question to the person who is actually the question is directed to, and that would be great. And we'll take only 3 questions, and I'll see three hands. Thank you. And questions? Rashid, the Anmol Delivery project, what is your target right now? Initial required, because if we don't have target, we cannot do the fundraising. 50,000 done. So, 50,000 done. So that's. I have 50,000. Tawana, sorry, to life membership. What is the life membership fee? सर असां लाइफ मेंबर फी जेका $2000 रखी आहे उन सां गॾु कोई मंथली केरु असांखे ॿार एडॉप्ट कंदो त $100 आहे महीने जो ख़र्चो, $1200 साल जा। छो जो ॿार वधंदा था वञनि, ही हिकिड़े ॾींहं जी ॻाल्हि न आहे। 5 खां 10 साल हिकिड़े ॿार खे इम्पैक्ट आणण लाइ असांखे खपनि था। तो उन लाइ असां चङो मुस्तक़िल फंडिंग खपे। ॿियो असां हिकिड़ो इनिशिएटिव वरितो आहे सिंध हुकूमत सां गॾिजी ॿिनि इदारनि सां। असां हिकिड़ो पूल फंड ठाहियो आहे इस्लामिक बैंक में। हिकु असां इंडोमेंट फंड क़ाइमु करणु वञूं पिया, जंहिंमें पैसा ईंदा रहंदा, उनजो जेको जाइज़ मुनाफ़ो हूंदो इदारे खे मिलंदो रहंदो। जेके मौजूदा इदारा नाड़काऊं नवाब शाह बि हलंदा रहंदा। ॿियो असां स्केल अप कंदासीं मिट्टी, ॾहरकी ऐं सांगड़ ऐं दादू में इंशाल्लाह अगस्त खां सेप्टेम्बर 2 खां 3 सेंटर असां ॿिया बि खोलींदासीं। Go ahead. Yeah. Okay. Sorry. No problem. मुझे सवाल आबिद लाशारी साहब है। आबिद भाई, you are the Rotarian. Yes. So why you have not kept the Rotary? Rotary is the 5th largest service organization, and it has a lot of the funds. Being a Rotarian, you should have tapped that. And if you need any help, Yes. I will be always there. And furthermore, I request the Sindhi diaspora over here. Rotary is present in almost 200 countries, and Chicago is the headquarters. And I request every Sindhi to go to the Rotary, join the Rotary. They have a lot of the funds to tap into it. साईं असां वटि जेको लोकल क्लब आहे सॉरी टू से उहो मूंखे सपोर्ट नथो करे। मां जूनियर आहियां ऐं सीनियर मेंबर आहिनि सभु जा सभु। केरु मूंखे गाइड नथो करे त प्रोजेक्ट अप्लाई कीअं कबो। मां करण लाइ तयारु आहियां। असां तव्हां सपोर्ट करियो असांखे।
मां तमामु जूनियर आहियां रोटरी क्लब में, मूंखे उहा हेल्प नथी मिले। हाणे मां एॾो उन मां डिसअपॉइंट थियो आहियां। जुलाई खां नओं गवर्नर आयो, मां हुनखे रिक्वेस्ट कई आहे मां नओं क्लब ठाहींदुसि नवाबशाह में, जी वजह सां कमु करे सघूं सर। थैंक यू सर। पहिरीं ॻाल्हि त मुंहिंजो नालो आहे डॉक्टर करतार लाल, मां साइकाट्रिस्ट कैनेडा में आहियां। अॻु में सखर में हुउसि। सखर में मां 1990 में पहिरियों साइकाट्री शुरू कई, जेके मेंटली रिटार्डेड ॿार हुया ॾिसणु शुरू कया। मां तव्हां कमेंट कंदुसि त जॾहिं मां वियसि सखर में 1990 में, त सभई ईअं चवंदा त हिन लाइ का दवा ॾे जो हुनजो दिमाग़ु ठीकु थिए। जॾहिं त रिहेब सर्विस जी ज़रूरत हुई, ऐं उहे एतिरनि सालनि खां न हुई। त इहा वॾी हिकिड़ी कमेंटेबल ॻाल्हि आहे तव्हांजी। एॾनि सालनि खां असां उते सखर जे हिन वक़्त ताईं अञा ताईं उते कोई अदारो न आहे। त मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे सखर जे इलाइक़े में, उन इलाइक़नि में तव्हां इहा सर्विस शुरू कयो। ऐं ॿियो तव्हां ईमेल या कुझु पंहिंजो ॾियो पंहिंजे हिन में, त जीअं तव्हां सां को राब्तो करे सघे, कीअं तव्हां सां इंटरेक्ट करे सघे, त जीअं ॿिया डोनेशन लाइ असां तव्हांजी हेल्प करे सघूं। असां वटि काफ़ी डोनर्स आहिनि सखर जे इलाइक़े में, जेके असां वटि पेशेंट खणी ईंदा ॿार, चवंदा आहिनि असां कीअं मदद कयूं, छो त हिन वक़्तु हुते कोई कोन्हे जंहिंखे मां रेफर करे सघां। थैंक यू सर। NDF पाकिस्तान सर उहा मुंहिंजो इदारो, गूगल में सर्च कंदो वेबसाइट अची वेंदी, उन में सभु कुझु आहे। www.ndfpakistan.org, आबिद लाशारी gmail.com, आबिद लाशारी सोशल मीडिया ते आहे, उते किथे बि तव्हां सां अप्रोच करे सघो था। ग्लोबल गिविंग में वञी उते बि NDF पाकिस्तान लिखो या नवाबशाह, तव्हां ॾिसां असांजो अकाउंट अची वेंदो, डिटेल अची वेंदो। $10 खां वठी मथे जेतिरो तव्हां मोकिलियो तव्हां मोकिले सघो था। ऐं ॾाढो दिसंबर में छा टैक्स कटबो आहे US में, हिते खोड़ सारा असांजा मेंबर आहिनि, अदी शाहिदा फाज़रानी ऐं ॿिया मुश्ताक साहब आहे, सहारो वारा दोस्त आहिनि, उहे असांखे मोकिलींदा रहंदा आहिनि। त जीअं तव्हां सभु सां गॾु पोइ त इनशा अल्लाह ताला ही हिकु मुस्तक़िल फंडिंग थी वेंदी असांजे इदारे लाइ। असां स्केल अप बि कंदासीं, मौजूदा फैसिलिटीज़ खे बि सपोर्ट कंदासीं। महिरबानी। Thank you. So we'll take 2 more questions. मुंहिंजो नालो रफ़ीक मेमन आहे। मुंहिंजो सुवाल आहे आसिम खां। तव्हांजो जेको प्रोजेक्ट आहे, जेको फैमिली क्लिनिक वारो, जंहिंमें तव्हां माना डेटा कलेक्ट करण जो जेको तव्हांजो प्लान आहे, I think it's going to be very expensive, number one, and it's going to take a lot of time to collect the data. मुझे मशवरा भी है, सवाल भी है, why don't you guys collaborate with a lot of organizations in Karachi, जेके माना एडी किस्म जो सर्विसेज प्रोवाइड कनि थियूं, या किडी सेंटर आहे SIUT, या जेको आहे ॿियो खोड़ वधियूं, why don't you use their data and train your model, AI model, so that they can get benefit and also at the same time you can get the benefit. Thank you. It's a good idea. I have thought about it. The problem is talking to those people. I find really hard to tell them how important it is to collect data. Yes. Even Aga Khan loses data, believe it or not. And they have a CIO, like full-fledged CIO, who takes care of the business. So they lose data. And I don't want to even get into the quality of data that you are working with. And in healthcare, at times, 99.99% accuracy is not acceptable in terms of, say, false negatives. So if you have a cancer, your model says this person does not have a cancer, so that is not acceptable. So it's very difficult. If you have a network, I can work with it. Yeah, sorry, I don't have connections. There will be people here, they might have connections. And plus, you know that data model, you have to train the model according to the data. US data may not be applicable to the Pakistani model. Over. Sai, you also offer something. Engineer Ghulam Shabir, Pakistan में आया है, वर्जीनिया में रहा तो कुछ करता है। I just offer. I'm 72-year-old, but इकडे तो को 2001 में मैं आया उस अमेरिका first visit भी मुझे इकडे जहाज में मुझे तो ऑफरेट हो 10 things to do before you die. So now I say हम करे सिर्फ and नहीं से है social work. So I offer my services for in the education field. निला फर्क है जेकर मौजूद services. I have 4 kids in 4 countries. So traveler है वो सेनानी किस्म में मानो है 5 महीना पाकिस्तान में हुए हैं बाकी 6 महीना वाली चेंजिंग बार में हुए हैं. My son is here in Virginia, so they 8 महीना 4 महीना हुए थे ब्रांडल रहे हैं. So I
ट्रैवल सर्विसेज रही सघां थो उहो मां ऑफर थो कयां बाक़ी ज़िंदगी जेका बाक़ी बची आहे आफ्टर 72 उहो तव्हां जीअं बि चाहियो तव्हां सर्विस वठी सघो था कहिड़े Thank you very much. Tell the word इलाही पर कॉन्टेक्ट कंदम इंशाल्लाह नाज़ा आओ जरूर गॾिजी करे कम कंदासीं दिलाही कुछ करे सघूं था सॼो ख़त्म थी विया महिरबानी तव्हांजी Thank you very much. That concludes our session. So most likely we are going to have lunch. Yes. All right, let's go. Thank you very much. Lunch is serving outside is a box lunches, so please go in and take a lunch. Thank you very much. Thank you. Come back in a 30 minutes. The other session gonna be started. Then there was a very important session. The two our friends who are traveled from Italy and came here to show their love with the set. So please attend their session. Thank you.